हेलो गाइस, आपका स्वागत है वीएस व्लॉग्स एंड रिएक्शन चैनल पे। मैं हूं विपुल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमएस धोनी का जो पॉडकास्ट आया है तन्मय भट्ट के साथ में। ये किसी चीज़ की लॉन्चिंग के अंदर मेरे ख्याल से आए थे, तो काफ़ी सवाल जवाब पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है। भाई काफ़ी टाइम से स्टेडियम नहीं गए, आज स्टेडियम आके कैसा लग रहा है? वेल मेरे लिए तो इनिशियली आई थॉट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो एक जनरली व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट एक दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है कि ये होगा वो होगा। आई फॉरगॉट वन मेन थिंग, क्या कि यहाँ पे 90% वाले ना मोबाइल के साथ रहेंगे। हाँ बिकॉज एवरीथिंग फॉर देम इज अराउंड द मोबाइल फोन। सो इट्स गुड टू बी हियर। थैंक्स फॉर द वेलकम। इतने प्यार से इन्होंने वेलकम किया है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी जितना भी समय हम यहाँ बिताएंगे इट विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड विल ट्राई टू मेक द इवनिंग लाइट एंड आप सबकी खिंचाई होगी बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। कैन एवरीबॉडी हियर माई भाई ऑल द वे एट द बैक इज वेल? सबको सुनाए, आवाज आ रही है? ठीक है माई भाई, सवाल जवाब पे हम आते हैं, पर सबसे बाकी कमेंट में बताना भाई, धोनी की ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी सही लग रही है और मीडिया में काफ़ी दिनों बाद में आए हैं, तो प्रॉपर बन ठन के। पहले 2 मिनट अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्या लग रहा है? वर्ल्ड कप के बारे में टीम मचा तो रही है। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। अभी हमने एक एड कैंपेन भी किया है, सो आई डोंट वांट टू जिंक्स इट बाय सेइंग एनीथिंग मोर, बट भावनाओं को समझो एंड इट्स अ वेरी गुड टीम। बहुत अच्छा बैलेंस है टीम का, हर लोग अच्छा खेल रहे हैं, सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। ज़्यादा बड़ा भाई आज ऑडियंस में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड आई बिलीव कि ऑन सम लेवल बीइंग एन एथलीट एंड बीइंग अ क्रिएटर देयर आर सम पैरेलल्स। सो आज कुछ कुछ सवाल मैंने और शरण ने डिस्कस किए जो आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ जो रिलेटेबल एक्सपीरियंस है जो हमारे क्रिएटर्स को भी रिलेट कर पाए, वैसे कुछ कुछ सवाल है। तो पहला तो आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो इतने, ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि आपको कॉल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यू आर नॉट द मोस्ट टेक सेवी पर्सन। आप फोन रखते नहीं हो आपके पास, आप धोनी नॉट रीचेबल पर्सन है। एक वीडियो देखी थी मैंने ये आईपीएल के टाइम पे, बाकी सारे जो क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह हैं खुद के फोन एक बास्केट वगैरह में डालते हैं। धोनी आया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे और सीधे निकल गए। फोन ही नहीं था भाई। व्हाट्सएप नहीं करते। डज बीइंग डिस्कनेक्टेड हेल्प? आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट एंड फ़ोन है मेरे पास एंड द ओनली टाइम आई रियली लुक फॉर माई फ़ोन इज़ रात को सोने से पहले, क्योंकि सवेरे का अलार्म लगाना होता है। सो फॉर मी माई फ़ोन बेसिकली डज द जॉब ऑफ वेकिंग मी अप इन द और मॉर्निंग। कैंडी क्रश इज़ ऑन द आईपैड। मुझे फ़ोन पे गेम खेलना नहीं पसंद। यहाँ पे धोनी की कैंडी क्रश खेलते हुए भी एक फोटो वायरल हुई थी, फोटो वीडियो। काफ़ी एरोप्लेन गेमर्स भी हैं, सो फ़ोन में दिखता नहीं है, इट्स ऑल टू स्मॉल एंड आई एम एजिंग। सो एनीवेज जो भी खेलते हैं इतना छोटा हो जाता है कि दिखता नहीं है। बट एनीवेज कमिंग व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। आप जब आप डिस्कनेक्टेड रहना पसंद करते हो, डज दैट हेल्प? वाज दैट कॉन्शियस डिसीजन? Especially in our case, it helps in a big way because we are all humans and जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो और इफ़ यू आर अ नोन पर्सनैलिटी देन एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन अबाउट यू। आप कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में एक ओपिनियन होगा, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे। एंड एज ह्यूमंस इफ़ यू आर टू मच कनेक्टेड टू द सोशल मीडिया और द मोबाइल फोन, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। कई बार आपको पता होता है कि बात का कोई रेलिवेंस नहीं है, बट बिकॉज वी आर ह्यूमंस यू स्टिल फील बैड। So especially before big tournaments or when you're going through a lean patch, I always advise the youngsters, मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। इनफैक्ट अगर मोबाइल देखना भी, अपार्ट फ्रॉम हाउ इट इज़ सपोज टू बी यूज, अगर इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स में हो, डोंट गेट इनटू रीडिंग द कमेंट्स। You have to realize a lot of people, they comment for the sake of having fun. They also don't mean it, but it's fun for them. But when you are going through a lean patch, cricket में हो या life में हो, everything starts to hurt. So anyways you have so much pressure on yourself, you want to avoid any undue pressure. ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो आई वोंट बी थिंकिंग अबाउट इट। एनीवेज जो मुझे सॉर्ट आउट करना है लाइफ के बारे में, उसके बारे में तो मैं सोच ही रहा हूँ। आई हैव क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव पेरेंट्स, गार्जियंस, दे विल हेल्प मी आउट। सो दैट वे इट हैज़ रियली हेल्प मी एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग द यंगस्टर्स, प्लीज़ जितना मिनिमल यूज़ करोगे उतना अच्छा है। बात तो सही है। तो सही बात है कि अगर सोशल मीडिया वगैरह आप चलाते हो, कुछ करते हो या कुछ कंटेंट वगैरह बनाते हो जैसे हम बना रहे हैं अभी, तो
आप भी अगर बनाते हो तो जो कमेंट सेक्शन है उससे दूर ही रहे तो बढ़िया है। लोग बात बढ़िया बोलते हैं तो अपने को मोटिवेशन मिलती ज़रूर है, लेकिन कई लोग बुरा भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए अगर सहन शक्ति नहीं है तो सही बात है। So I wanted to ask something. So before you retired, I'm sure there was a lot of expectations on you in terms of performing in cricket, and every day would have been really, really difficult in terms of dealing with the expectations. But now that you've retired, has One second, retired from international cricket From- only. हाँ, point to be जरूरी है noted. भाई. Hello. There's a CSK fan. वैसे my भाई, how's the knee feeling? Knee have survived the operation, so now going to Excellent. the rehab patch and सही बात है, चोट लगी। rehab exercises चल रहे हैं। नवंबर तक डॉक्टर ने बोला था you'll feel much better by November, but daily life में ऐसा कोई problem नहीं है। तो retired from international cricket only. Please so continue. retired from सही बात है यार। अगर आईपीएल से वैसे धोनी ने बोला नहीं था कि रिटायरमेंट ले रहे हैं या अभी सस्पेंस बाकी है, तो अभी भी लोग चाहते हैं कि धोनी भले खड़े रहे पीछे विकेट कीपिंग करते रहे कि हाँ भाई इधर जा उधर जा। भाई धोनी का प्रेजेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है यार। from international cricket, has life become easier in terms of the expectations and the pressure? Has life become easier in general? Well, frankly, if you ask me, if you're a celebrity in India, if people look up to you, there's always certain amount of responsibility, roles that you're supposed to fulfill, and that expectation is always there. Also, I'm only playing IPL, which means I'm actively playing cricket for 2 months in a year. In fact, it's slightly more difficult because I'm not playing throughout the year. So now my role and responsibility for CSK or towards cricket, I have to keep myself fit. So I have to plan the whole year where, what I need to do, when I need to do. I'm 42, running 43, which means I have to eat nicely. I can't just eat what I want to eat. You have to train because at the end of the day, nobody cares if you're 42, 45 or 50. If you're competing with people at the top level, you have to be at the same benchmark, what they are setting. They may be 20, they may be 15, they may be 17. So if you're competing with them, you have to be like them. So there's no excuses for that. बाकी एक चीज़ हो सकती है भाई, धोनी से मान लो क्रिकेट में लोग compete कर ले, लेकिन जो माइंड सेट है उससे compete करना मुश्किल है, नामुमकिन है। So that's one of the reason I find it slightly more difficult. You have to be very motivated. At the same time, your friends keep on complaining. They'll be like, we gave you a lot of time, now that you have retired from international cricket, you have to spend some time with us. You need to eat what we are eating and all of that. So you have to balance it out. So that expectation level, that pressure is still there. My way. बाकी जैसे जिसने MS धोनी मूवी देखी होगी या फिर जो भी धोनी को जानते होंगे, बाकी सुलझे हुए आदमी है। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, और मतलब जो सवाल के जवाब जो दे रहे हैं ना कितने क्लियर है यार। I would love to know, थोड़ा मुझे कैप्टनसी के बारे में बात करना है, because a lot of people here run their own offices, a lot of them are entrepreneurs, they also have their own teams. एक तो मुझे जानना है कि when did you find out, what was the moment you found out you're going to be captain, and did you think of the moment you were captain like, okay, what am I going to be like in the dressing room, because there's a new leader in the dressing room. तो एक तो कब पता चला आपको? It's very interesting. If I'm not wrong, it was 2007 में हमारा इंग्लैंड का टूर चल रहा था. So they made me the vice captain for the limited over format ODI में, and then when the seniors, they were not coming for the T20 World Cup, there were very good chances that they'll make me the captain. So it was a new thing for me, frankly. Coming from Jharkhand, it was Bihar initially. I never thought I'll play for the country. That was the first thing. So जब country खेलने का ही dream उतना बड़ा नहीं होता है, तो you cannot ever imagine even in your dreams कि you'll captain the side. So it was a surprise for me. I was happy, yes, but at the same time I said, how should I look at it? So I looked at it as an added role and responsibility that was given to me. Not to forget, I had seniors who were part of the side from long before. I was relatively new. 2004 December I made my debut. So I was like, I'll just keep it as a role and a responsibility. I will never think about myself as a captain. I don't want to change myself in the dressing room. Yes, I have that responsibility of picking the 11. On the field, I have to guide the fielders, take the
bowling changes seriously, and I just kept it to that. Outside the field, I never showed to anyone or told anyone, that as if I am the captain of the side. You need to do this, you need to do that, because when they are seniors in the side, you have to earn their respect. That's one of the most important thing. If you are a leader, if you are a boss, you want to have the respect of the people you are leading or representing. So for me, that was my biggest challenge. सही बात है. कई बार जैसे कई जगह बोला भी गया है कि इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया. जब धोनी कप्तान था तब एज ए कैप्टनसी जो निर्णय लेने चाहिए थे वो लिए, और कौन सीनियर है कौन जूनियर है उसको साइड में रखते हुए जो मतलब काम जो होना चाहिए था वो प्रॉपर हुआ. और भैया इसी के लिए धोनी धोनी है. So, how do you actually keep calm and cool when the situation is so, it looks almost next to impossible? Like one of the instances that I can think of is the India versus Bangladesh match where they required 1 run in 2 balls, right? 2 runs in 3 balls, and we won the match. Like, how do you kind of compose yourself in these sort of situations? Like, are you really cool inside, or is it just the, the exterior looks cool? नहीं, पहला तो ऐसा लग रहा है ना मुझे बीच में बैठा के दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं. But it's a lot more fun because I can share my experience with you guys, and I've always been someone that believes in the process. I'm not someone who looks at the result. So even in this scenario, I was never thinking what if we lose the game. I was thinking what can be done. What should Hardik bowl? What is the field setting that I should have? Where whatever resources I have, what is the best way to make the most of the resources I have? If I have half a glass of water, I don't think about the other half that is not there. Okay. So at that point of time, I'm thinking, okay, this is the length we need to bowl. If you're going for a Yorker, what are the pros and cons? The only thing is everything needs to happen very quickly. So you need to take I would say a good decision at that point of time, because best decisions generally बाद में आते हैं. बोर्ड रूम में बैठेंगे आराम से सोचेंगे बात करेंगे, but a lot of times in cricket you don't have the luxury of time. So we kept it simple. We are like, this is the length that you should bowl, and we'll take it from there. We'll take it 1 ball at a time, and it worked. At the end of the day it worked. But the thing is not to think about the result. Result is whatever you do, the process you are following, the byproduct is the result. So if you need to revisit, you revisit the process. Result, it's more like a learning. It tells you what went wrong, so you take the learnings out of it. You don't carry that excess baggage on your head. Oh, I lost, this happened, that happened. No, it's all irrelevant. You lost, you accept that loss, and the only way to move forward is to take the learnings out of it. Okay. Speaking of, तो क्या बात बोली है यार, कि मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल, उनके बारे में सोच के ये बातें है ना, सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं, ये लाइफ में भी अगर कोई अप्लाई करता है कि अपने पास क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, इन चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा आगे की सोच के कोई अगर काम करता है कि हाँ भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बोले ना जैसे कि अगर मेरे पास आधा गिलास पानी है तो मैं आधा गिलास पानी जो है उसके बारे में सोचूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा कि आधा गिलास क्यों नहीं है. तो ये पॉजिटिव माइंडसेट को दर्शाता है, सीधी सी बात है. तो बहुत तगड़ी बात बोली है यार. learnings my way. Yes. क्या बोला है पीछे? I always wondered, you have You accept that loss, and the only way to move forward is to take the learnings out of it. सही बात. Speaking of learnings my way. Yes. I always wondered, you have the brand of being Captain Cool, right? तो जब आपको फीडबैक देना होता था कोई क्रिकेटर को, तो आप कैसे फीडबैक देते कि ये चेंज करना है? लाइक वाज देयर अ पर्टिकुलर अप्रोच जो सबसे इफेक्टिव रहा है? Like in our environment, I always preferred one-on-one. If you see, Indians, we are emotional people. I know the whole world is turning and saying, we need to be much more professional. But our strength is that emotion, as simple as that. We are the only country that has maybe 10,000 patriotic songs. We have songs for our family, we have songs for wife, brother, sister, everything. So we run on emotion. So I always believe one-on-one works for a simple reason. Let's say if I'm addressing a team,
let's say even in business, there are like 14, 15 people in a room, and if you point finger at someone, all of a sudden he feels bad about it. The thing is, he's not hearing or listening to what you are saying. He has just felt bad and he doesn't like it. So I always prefer talking one-on-one. One-on-one में ये होता है कि, let's say if I say a sentence to him in front of 15 people, he will feel bad. If I take him to a side and maybe add a few more grammar or adjectives to it, he will still be fine with it. तो प्लेयर को कोने में लेके जाके ओ श्री वहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी अलग से बोल देते No, these things so you can say on television also, because basically what you mean is everything is happening here. Why are you looking on the other side? So as simple as that. Do you remember any example of someone was having a tough time and you gave them some particular feedback that really helped them? कुछ याद है आपको कोई स्पेसिफिक? ऐसा काफ़ी बार होता है. वो थोड़ा हनुमान की तरह होता है. जब लंका जाना था समुंदर के ऊपर से, तो हनुमान जी always had that power in him, but he was not aware about it. So जब आपको प्रेशर सिचुएशन में जब आप आते हैं, तो कई बार आप अपनी स्ट्रेंथ जो होता है, आप वो भूल जाते हैं. You stop believing in yourself. So others, your teammates are believing in you, but the first person that loses faith is you yourself, on the talent that you have. So कई बार वापस बोलना पड़ता है कि this is your strength, these are the places that we can work, but as of now keep working on the strength that you have, because your strength will get you out of the difficult situation. So usually a lot of times what we have felt is, even मतलब टाइम को हम लोग गेज करते हैं, कई बार आपको टेक्निकल चीज़ें सही करने का टाइम नहीं होता है. सो यू से कि लीव दैट असाइड, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ इज दिस मैन फॉर मी इन द टूर्नामेंट. So a lot of time you even give them false confidence, because it is important. A confident guy is much better than a talented guy who always keeps questioning himself. That's very true. Yeah. So again what it depicts is you have to make the most of what you have. So we have a 15-member squad or a 16-member squad. उसमें से ही player खेलेंगे, उससे ही हम जीत के आगे बढ़ेंगे. So what's the best way in which we can perform to 80 or 90% of the potential that we have? You have of course helped many players in their journey, my boy, but as a leader, you have to be strong. You have to not show your emotions. You have to, no matter जो भी हो रहा है, आपको एक strong face दिखाना होता है. But how do you be vulnerable? कभी आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है. Were you able to be emotional in front of the other players कि विराट मुझे ये तकलीफ हो रही है, या हार्दिक I'm having trouble with this. Were you able to be vulnerable? Is that something that you ever did? No. Irrespective of how strong you are, irrespective of whether you are a leader or not, there will be times when you will also feel the same kind of pressure. It's just that I'm not very good at expressing. I don't express much. I keep things to myself, so that's how I deal with it. The good thing with me is I try to be in the present. So once I'm inside, once I'm in the situation, I don't think too much about whether I'm in form or I'm out of form. For me, okay, what is needed? I bat at 5, 6 or 7. What does the team need from me as of now? So once I start thinking about the process that I need to follow when I'm there, I don't have enough time to think about whether I'm in form, I'm not in form. Did I score match runs in the last game? Whether this bowler got me out? So all these things become irrelevant. So again, you go back to the process. You have belief in yourself. क्योंकि क्रिकेट में फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने देखा नहीं है. एक बंदा 3 मैच 4 मैच में 0 पे आउट हो जाता है, फिर वो 100 बना देता है. So it's an abstract. Form is an abstract. It comes in 10 minutes, it goes in 10 minutes. So we never know when that 10 minutes will come. So you have to be positive, you have to believe in the process, you have to be aware of the situation, and that's what gets you out of trouble. This, my father once told me this. He said कि I asked him this once, saying I wonder if Mahi bhai feels vulnerable at some point. And he looked at me and he said, एक पापा पे क्या जूझ रही होती है वो सिर्फ पापा ही जानते हैं. I would 100% agree, but again, as I said, when you have that extra role and responsibility of taking care of everyone that is around you, आप अपने जो भी दुख होता है या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में थोड़ा कम सोचते हैं. And in a team sport, often, yes, the individual brilliance is there, but we rely on the team effort. तो कई बार दूसरे के हेल्प के कारण, लेट्स से आई एम गोइंग थ्रू अ पैच जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ, बट रन रेट ज़्यादा है, तो कई बार होता है कि मेरा जो पार्टनर होगा, वेदर इट्स अ नंबर 4 बैट्समैन और 2-3 जो भी होगा, he gives me that few deliveries because he is scoring boundaries. Then we are converting those 1 runs into 2 runs or 2 runs into 3 runs. Those are the things that really help you.
And same thing will happen to the other guy, and that time I need to take that responsibility. And that's what the team sport is all about. That's what needs to be done in a team environment. And often we think that team है तो sport होता है. No, it is applicable in business. It is applicable in a family, because family में भी आप एक team हो जाते हो. So you have to look at it in a way that you're very positive about it, and you have to make the most of everybody who's around. मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जो एमएस भाई बता रहे हैं ये फॉर्मूले ना मतलब ग्राउंड में तो लग ही रहे हैं, लेकिन लाइफ में भी, बिजनेस में भी, फैमिली में भी, मतलब हर जगह ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं अगर अपन चाहे तो. जैसे वो बताए थे कि अगर 15 जने हैं कोई बिजनेस में और किसी एक को अपन पर्टिकुलरली अपन बताएंगे कि हाँ भाई तूने ये काम खराब किया, सही किया, तो उसको बुरा लगेगा, उसको साइड में ले जाके बता दो. वही चीज़ फैमिली में भी है कि हाँ भाई तुमने ये गलत कर दिया, वो कर दिया. तो ये चीज़ें मतलब सब जगह अप्लाई हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो. Yeah, so most of my friends today who are in their 20s and 30s, they're very hungry for success. They want quick success. So as someone who has had such a fantastic career and has achieved so much in the eyes of the public, does it feel like there is more to achieve? Is that hunger still alive? Or if not, what is important to you today in life? You know, right from the start, I was not into that people should remember me as a good cricketer. I always said, I want to be remembered as a good human being. And if you want to be a good human being, it's a process till you die. So cricket to me is a part of life. So once I started playing serious cricket, or once I started representing India, you'll play for India for 10 years, 15 years, 5 years, or 20 years. If you are, if you start at an early age, maybe 20 years and beyond, but the whole thing is it is still part of life. If I consider I live for let's say 60 years or 70 years, it's 1/3 of my life. So you want your life to be productive. If I score run, I'm scoring runs for myself. But what is it I'm doing that I'm making it better for people who's around? So मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे साथ का जो batsman है, his life in the crease becomes easy for him. So for me, every day is important. I try to be the best version of myself. And that's what keeps me going, and that is something that has kept me going for a very long time, and I don't think I'll change that perspective, because cricket will end, whether next year becomes my last year or the year after that, but again, it will be a part of my life, that will have a comma or a full stop, but the life continues. मैं 5 और साल कम से कम 10 साल 1 year at a time. 1 year at a time. भाई एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरे को पर्सनल एडवाइस चाहिए. तो आई एम सिंगल, ओके, एंड आई फील लाइक when the rest of your life is so chaotic, having a partner who brings some sort of stability, that is very appealing to me now. कि बाकी दुनिया भर इतना काम में इतना chaos चल रहा है, at least home life is sorted. Do you remember how your life changed when you found some stability in a relationship in your personal life? Like does it help? Does it help to have, How many of you are married over here? I don't know. I asked this question and a lot of people laugh. It's a serious question. How many of you are married? So that's one. Second, how many of you have a girlfriend who's steady and you think you'll get married somewhere in the future? ये कोई confess नहीं करेगा. इसमें भाई आपने how many of you have a girlfriend who will get married पूछ लिया, तो किसी को commit नहीं करना है अभी. No, so the interesting thing is it's how you look at it, and I feel as a man, all the masala in our life comes from the wife. She keeps our life going. You may be the captain of the Indian cricket team or the ex-captain of the Indian cricket team, it hardly matters to them. It's a grounding factor. Yeah. You have a place in the house. And usually it's not your choice. आपको भी भेजती है धनिया लाने. That's what I said. You may be the captain, you may not be the captain. And the best thing is, they will be like, सब कुछ तो तुम्हारा चलता है. Whatever you say gets done. Everything you want, you get it done. But the whole thing is, it's what they want that you are doing, and they make you feel you are doing it. It's your decision. So if something goes wrong, which can, they're like, तुमने decide किया था. मैंने तो पहले ही बोला. So they also help us in a big way, because life is chaotic, as you yourself said.
Now imagine there's a trainer in the house that is training you how to control that chaos by creating chaos inside the house. Practice. No, but whatever said and done, you know, we all joke about it. That's a common thing. But they're the pillar of strength in the family. Whether it's my wife or if I see my mom, you know, they are the ones who run the family. So I came from a middle class background. So my father will give the salary. After that, he doesn't ask her, you know, how you will run the family. She has a budget, and now she has to run for whatever 30 days or 31 days. So they're excellent at it. You know, अब बच्चे हैं, बच्चे को चॉकलेट खाना है, आना उसी पैसे से. So they'll quickly reassign everything. Okay, yeah, this can be done. So I feel, you know, they are the ones that bring that comfort into our family. You always fall back to them. You can ask them anything. Often when I'm frustrated, you know, I take my frustration out on them. You know, which is not a good thing, and I have to eventually pay a heavy price. But that's how life is. So, you know, if you find someone, you know, that you're really happy with, you know, please do get married. जो यहाँ पे बैचलर्स हैं, you know, और जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा बाय एंडिंग दिस आंसर. ये मत सोचना मेरी वाली अलग है. अरे खतरनाक यार, ए भगवान. अरे खतरनाक था यार, खतरनाक. इस पॉडकास्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से. लास्ट के अंदर तो भाई मजा ही लेगा कि मेरी वाली अलग है. अरे खतरनाक यार. बाकी धोनी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी खतरनाक है भाई साहब. काफी जगह रिपोर्टर वगैरह, एक बार रिपोर्टर मेरे ख्याल से पूछा था ये कि आप रिटायर कब हो रहे हो, तो उसको स्टेज पे बुला लिए थे. हाँ भाई, डू यू थिंक आई एम अनफिट, और ये एक दो चीजें पूछे तो उसने बोला ना. तो बोलो ठीक है भाई, जवाब तो तू ही दे दिया, अब निकल ले यहाँ से. अरे खतरनाक पॉडकास्ट थी भाई ये. और बाकी MS धोनी की जो बातें हैं ना यार, और एक पहली चीज तो ये है कि माइंडसेट तगड़ा है. दूसरी चीज ये है कि भाई सिचुएशन के अंदर जीने वाला बंदा है. अपने पास अभी क्या है, फोकस्ड रह के कि भाई क्या क्या अवेलेबल है, उस सिचुएशन में बेस्ट से बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को छोड़ के. तो भैया ये पॉडकास्ट हमें तो लगी शानदार. और ये पॉडकास्ट इन्होंने टाइटल दिया है, वैसे इंटरव्यू कह सकते थे इसको, पब्लिक पॉडकास्ट. तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? और हमें तो भैया मज़ा आ गया. और आप ये कमेंट में भी बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर यहाँ तक आप देख चुके हो तो. और बाकी काफ़ी सारी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हो. तो इसी के साथ बाय.